Thank you very much, Dr. Gopal sir and Dr. Rakesh sir and Dr. Prabhakar sir. I have enjoyed this Genomics and Proteomics 8th batch online course. It is very well planned and very much informative, sir. Especially, I thank Dr. Gopal Jee very much because he has taken all the pains and he has imparted us all the knowledge. He's like a walking Wikipedia, sir. He knows everything, both the practical knowledge as well as theoretical knowledge about the genomics and proteomics, sir. The genetic engineering part, biotechnology part, and the protein engineering part, page, everything, all practical aspects as well as the theoretical aspects. He has enumerated and elaborately he has described everything in detail, and he has also shared us a lot of PPTs with us in the Google Classroom. And he also conducted the quiz, and every time he is asking the feedback and he is taking all the questions, and he is very much without any sort of fatigue. He is answering he's taking all our queries and answering repeatedly. And I feel very much delighted to join this, and thank you for the opportunity, sir. He's a really gem of candidate, Gopal Ji, sir. Hats off to you, sir. Thank you very much. Thank you, sir, because you have attended, I have seen you have attended almost all students. Yes, sir. Yes. Tired, but your age, you are, I think, 10 years more elder to me or more, but still you have attended. I have seen few classes, except few classes you have attended all, and you are interacting also. That's why. So please introduce also, sir. You have started. Yes. Sir, I am a professor of biochemistry, sir. I am working as Professor HOD at Telangana State, sir, in the Siddipet Government Medical College. I have joined this course because while we were doing our postgraduate, we were not exposed to any sort of these genomics and proteomics, sir. So that is the very reason I have seen your post through the LinkedIn app, and I thought I will join this. And also my faculty, Mrs. Nazia, also joined, sir. And we are very much delighted, and we are very much impressed with your painstaking lectures, and we are very much wonder what call we are very much impressed with your knowledge, sir. So much of practical knowledge you are having. Sir, one suggestion I would like to make, sir. Yes, sir. Yes, sir. We would like to see all those experiments like page, everything, no, sir. So we would like to see with a physical workshop, sir. Yes, sir. Yes, sir. Your suggestion in first day or second day, I have kept it in mind. So whenever we will organize, or some of our colleague will organize, definitely I will call you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. We will definitely attend, sir. Yes. We come to Surat and we'll visit your place, sir. You are welcome. Whenever we will organize, there are so many techniques, but few of the technique we can organize hands-on. All techniques are not possible because I have learned during my PhD, and it was very well-equipped lab. And in private university, it's very difficult to get all these facilities, Anna. Yeah, I can understand, sir. But even then, in spite of all those hiccups, you made it, sir. You made it, sir. You are great, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Other participants may also share. Hello. Other participants, नाम लेना पड़ेगा क्या? You can share your feedback. You have listened me 12 days, but you are hesitating, and your faculty also
See, this is feedback, so you can tell good thing also. You yes, can tell good and bad bad, thing all also. things. I Whatever you always accept this thing, and whatever feasible, possible, I will try to improve. if Karuna something was- madam. if something Hello, was hello, lacking, that sir. Yes, Hello. yes. Yes, sir. Sir, this is first time that I am attending biotechnology lectures in very short span. Like I remember during BPharm also we used to have like it was feeling bit difficult to go with biotechnology because being for a pharmacist or a chemistry background, we don't give much importance to biotechnology. But you have covered very well with precisely what is required and with all basics making it clear. So that's why I'm actually uh, first lecture, first session I attended, and next also for genomics also I joined. So I would like to join more sessions so that I can grasp as much as possible. Yes. So please introduce, madam. Yes, sir. I'm from Parul University. I have done my BPharm, MPharm, and PhD in pharmaceutics. So we don't have much relation with the biology part, I can say, or the microbiology. But since I'm teaching now microbiology and biotechnology, I have to brush up myself. Yes. So thank And also for practicals, like it was very helpful for practicals, sir. Like you, whatever you have shared, the techniques and the way you speak it so clearly, like so we can understand the practical aspects also. Thank you, madam. Thank you. Because teachers cannot be managed. क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर में फीडबैक इज मैनेज्ड एंड आई डोंट बिलीव कि मैनेज करके हुआ जाए और बच्चे को बोल के. So if teachers are giving feedback, it also boosts me to do more and more because we always compromise my family life also. But I am very passionate. So many free lectures also we organize with the help of my colleagues. So we also need sometimes synergy and always there is scope for improvement. So faculty should share that. Thank you, madam. Yes, Now, yes, thank you, sir. Students. First of all, good evening to everyone. Sir, I'm Indu. I'm a student of MSc Microbiology in HNBGU, Central University of Uttarakhand. एक्चुअली सर आपने पढ़ाया बहुत अच्छा, मतलब जीरो से स्टार्ट करवाते हो बहुत बेसिक से, जिससे कंसेप्ट जो है काफ़ी क्लियर हो जाता है. लाइक कई बार जो मतलब मोस्टली वैसे मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज अ स्टूडेंट, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मतलब जो काफ़ी हायर स्टडीज में जा चुके होते हैं तो वो ना मतलब जब पढ़ाते हैं तो वो बेसिक से नहीं स्टार्ट कराते. लाइक अ टीचर वो नहीं पढ़ाते, मतलब एक प्रोफेसर की तरह से ऊपर ऊपर से, मतलब उतना डीप में नहीं जाते. आपने डीपली पढ़ाया. बट सर वन थिंग विच इज नेगेटिव दैट इज के कंटिन्यूसली मतलब 3 घंटे का जो लेक्चर होता है, मतलब ह्यूमन माइंड ऐसा है कि वो 3 घंटे कंटिन्यूसली फोकस कभी नहीं कर सकता. बीच में फोकस जो है वो जाता ही जाता है. इवन हम बुक भी पढ़ते हैं तो मेरा नेचर ऐसा है कि मैं 5 मिनट में जोन आउट हो जाती हूँ. पैरा पढ़ रही हूँ, फर्स्ट पैरा तो समझ आया, नेक्स्ट भी रीड किया, पर मैं जोन आउट हो गई थी. मतलब पढ़ तो मैं रही, मेरी आईज पढ़ रही है बट मेरा ब्रेन नहीं पढ़ता. तो वो चीज़ है. तो अगर आप जैसे अगर आप 3 घंटे भी कंटिन्यूसली लेक्चर करना चाहो तो जैसे 1 घंटे के बाद 5 या 10 या मैक्सिमम 15 मिनट, ताकि वापस हमारा ब्रेन जो है वो फोकस में आए. लाइक ये ना हो कि हम फिजिकली तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन हमारा माइंड जो है वो अटेंड नहीं करता. तो हम तो बीच में देते थे ना 5-10 मिनट ब्रेक. सर मतलब 1 घंटे के बाद जैसे होना थोड़ा उतना कंटिन्यूस. बिल्कुल बिल्कुल. ये सजेशन क्या है, 2 चीज इसमें है मेरे हिसाब से. एक तो मेरा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो, है ना, ग्रास्पिंग कैपेसिटी. क्योंकि एवरेज तो ऐसा है कि ऑनलाइन यू कैन नॉट फोकस मोर देन 8 मिनट. 8 मिनट से ज्यादा कोई फोकस ऑनलाइन में नहीं कर पाता है, ऐसा सर्वे है. बट वी हैव टू इम्प्रूव दैट. 8 मिनट के बाद हम अगर ब्रेक देंगे सो वी कैन नॉट गिव दैट मच. नो सर, नहीं 5 मिनट के बाद नहीं, जैसे 1 घंटे के बाद अगर मैं क्या बोल रहा हूँ. यस, योर सजेशन. सो प्रीवियस बैच ना, प्रीवियस हम 2 घंटे लेक्चर लेते थे, उसमें ब्रेक देते थे. लेकिन सिंस दिस इज 30 आवर्स, सो हमने सोचा कि ब्रेक कम दे, है ना. और देखा कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट भी आ जाते थे, है ना. तो इसलिए बट नाउ आई विल ट्राई कि ब्रेक हर 1 घंटे के बाद दें ब्रेक, है ना.
Yes. 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद तो हम 5 मिनट 7 मिनट का ब्रेक दिए ही हैं, 1-2 दिन नहीं दिए होंगे तो, है ना? बट So actually एज अ स्टूडेंट मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि ऐसा Yes. हो जाता है, नॉर्मली सभी के स्टूडेंट्स के साथ तो होता है। यस, लेकिन हम चाह रहे हैं बाबू कि आपका ग्रास्पिंग कैपेसिटी भी बढ़े। आपको बताऊं, मेडिकल प्रिपरेशन में मेरा नहीं हुआ मेडिकल, लेकिन हमारा कोचिंग जो होता था 10 घंटे का होता था। हमने Yes. पढ़ाई छोड़ के फिर से मेडिकल का किया, है ना? और मेडिकल में नहीं हुआ, लेकिन वही पढ़ाई किया हुआ मेरा जो है ना कंबाइंड बायोटेक एग्जाम में पास हुआ या नेट एग्जाम में पास हुआ। आप समझ रहे हो? Yes. You should expand your grasping capacity। आपको बताऊं, क्योंकि ये जरूरी है, बट हम आपका सजेशन देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ना। थैंक यू इंदु। मैं भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। yes। Now any other participants? Don't hesitate, please share। ये इन्होंने बताया तो देखूंगा कि कहाँ पॉसिबिलिटी है, ध्यान में तो रहेगा। यस चंदा। गुड इवनिंग सर। कैमरा ऑन नहीं होगा ना? हमारे बहुत सारे बच्चे कैमरा ऑन ही नहीं करते, क्योंकि कोई ट्रैवल में होते हैं, कोई कहीं होते हैं। बाद में जो है ना होगा चंदा कैमरा ऑन। सर एक्चुअली मेरी रूममेट पढ़ रही है तो मैंने माइक भी थोड़ी देर ऑन कर सकती हूँ। ठीक है, असल में यही प्रॉब्लम है। ओके चलो कंटिन्यू। सर मेरे को सिर्फ एक चीज वो करनी थी, सेम चीज जो मेरे सीनियर ने बोली, पर रीजन कुछ और था कि 3 घंटे ना होकर अगर पर डे अगर 2 घंटे हो सके और डेज एक्सटेंड हो जाए भले, क्योंकि यहाँ मतलब सब लोग टीचर्स भी आके मैनेज कर रहे हैं टाइमिंग। हमारा ये हो रहा है कि हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे साइमल्टेनियसली एग्जाम्स चल रहे हैं, असाइनमेंट प्रेजेंटेशंस वगैरह दी जा रही है, जो कॉलेज का काम नोट्स वगैरह अलग हो रहा है। अब कुछ दिन ऐसा हुआ है बीच में कि मेरा लेक्चर आपका वाला कहीं कहीं पे छूट गया है, क्योंकि मुझे साइमल्टेनियसली प्रेजेंटेशन बनानी पड़ रही थी उस दिन। उसका उपाय हमने बताया कि आई विल अलाउ यू इन नेक्स्ट बैच आल्सो इफ यू विश टू अटेंड, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि 10-5% ही दूसरे बैच में अटेंड करते हैं। हम चाह रहे हैं भाई कैपेसिटी, लर्निंग एबिलिटी आपका बढ़े, वो भी एक ध्येय है इसका, समझ रहे हो आप? नहीं तो पेड पार्टिसिपेंट्स 45-46 है ना? बट यू कैन सी 21। आप धन्यवाद के पात्र हो कि आप कंटिन्यूअस अटेंड किए हो। बट कुछ लोग 1 महीने बाद बोलेंगे सर सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट मेंटालिटी, overall mentality of this society, because we have that much population, 140 crore, and we have only knowledgeable 0.1%। इसीलिए तो हम अमेरिका इंग्लैंड से सामान मंगवाते हैं। डिग्री होल्डर या पॉपुलेशन की कमी नहीं है, बट वी डोंट हैव दैट स्किल्ड पीपल। समझ रहे चंदा? ऐसा सर नहीं, मुझे सीखना है कि छोटे में। आप देखियो करुणा मैडम ने या सुरेश सर ने इतना एज के बावजूद, अपना वो होने के बावजूद कंटिन्यूअस किया है। लेकिन बहुत सारे आई नो सो मेनी बीएससी एमएससी स्टूडेंट दे हैव नॉट अटेंडेड। अब सोचो उसके लिए क्या उपाय है? सर नहीं, मैंने अटेंड किया, मैं सुन रही थी बस, ये था कि मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यू आर, आप धन्यवाद के छूट गई मेरी किया है। सर मैं अगर हो सके नेक्स्ट में करना चाहूंगी। मेरा बस ये था कि अगर थोड़ा सा टाइम मतलब डेज भले एक्सटेंड हो जाए, पर टाइम डेली का कम हो जाए, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाता सारी चीजें। हम 12 बजे तक कोशिश करते हैं कि हमारा जो कॉलेज का काम है वो ऑब्जर्वेशन क्या रहा है कि हमने कुछ बैच जब 2 घंटे किया ना, तो 15वां 16वां दिन 15-16 दिन हो जाता है, तो उसके बाद और भी कम हो जाते हैं 2 घंटा करने के बावजूद भी। ये तो 11 दिन में खत्म किया, 12वां दिन है। जब 15-16 दिन चलता है तो लास्ट में बचते ही नहीं। आप सोचो कि प्रभाकर जी का हमने कल लेक्चर करवाया, वी हैव सर्कुलेटेड टू मोर देन थाउजेंड्स पीपल, है ना? एंड दैट टॉपिक वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन देखो 20, 25, 40, 45 लोग आए, और उसमें भी आते थे और चले जाते थे 1 घंटे में। और राकेश पटेल सर है, आई हैव ऑब्जर्व कि सर शुरू में आते थे और 1.5 घंटे का लेक्चर होता था, पूरा अटेंड करते थे। पैशनेट होना पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना? We have 500 faculty in our university, and Vice Chancellor have given freedom to conduct this course to every faculty. But you will imagine, no one I have completed, this is 34th batch, 26th recombinant DNA technology, and this is 8th batch of this. And all batches duration is more than 30 hours. आप समझो, आपको कहीं ना कहीं बाबू प्रायोरिटी लाइफ में सेट करना पड़ेगा। ठीक है अभी एग्जाम है, लेकिन हम बच्चे को बताते हैं नॉर्मली कि यो ध्रुवानी परित्यज्य ध्रुवानी परिसेवते ध्रुवानी तस्नश्यन्ति या ध्रुवान नष्ट में भी। निश्चित को छोड़कर जो अनिश्चित की तरफ गया, तो अनिश्चित है, निश्चित भी खत्म हो गया। So you must be focused, then you will enjoy, है ना?
यस, बट आप अटेंड करना दूसरे में भी, मुझे मैसेज करना, हमको याद नहीं रहेगा, है ना. एनी अदर पार्टिसिपेंट्स प्लीज शेयर योर फीडबैक. एंड अभी जब हमारे पास रहेगा कि ये बच्चे चाह रहे हैं पढ़ना, सो बहुत टाइम में फ्री बैच आपको करने देंगे, दूसरा तीसरा बैच. इफ यू विल जस्टिफाई दैट यू आर नॉट एबल टू पे and you wish to attend, so I will allow that also, but you have to justify. Suppose sometimes people are paying 50,000 rupees per semester, but this course price is 600 700, so that is not justified. समझ रहे हो आप. लेकिन सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज का बच्चा है या प्राइवेट में कम पैसे वाला जहाँ, so I allow them free of cost also. नहीं यार, मतलब सीखना तो सब चीजें बस ये होता है ना, कुछ कोर्सेज की बहुत ज्यादा हाई फीस होती है, जैसे आपकी तो 700 है, कुछ की बहुत हाई फीस होती है. अब हमें सीखना भी है और हमें फिर अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी है, तो हमें जो बेयर मिनिमम में जो हमें मिल जाता है हम वो अटेंड कर लेते हैं. कॉलेज की फीस जो खर्चा वो तो जैसे वो अलग बात है. Yes. Any other participants from different? So Chanda and Indu is from HNBGU, है ना, Central University. Yes, yes, sir. Yes. Any other from other university? Good evening, sir. Good evening. Yes. I am Zahir from Andhra Pradesh. I am a postgraduate student of zoology from Yogi Vemana University. It's a great initiative by Dr. Gopal Jee Gopal sir, and I very gladly thanks Prabhakar Jha sir for taking yesterday's class regarding the cloned and signals. Prabhakar Gopal sir has taken a huge responsibility of collecting all those senior faculties and experienced faculties for sharing their views on various topics. Jitendra sir, Poonam ma'am, all those faculties have shared their knowledge with lecture थे. As a student of zoology, I have to grasp knowledge from all various topics. That's why I am taking their names. Yes, yes. It's a huge initiative, and I gladly thank you all those faculties and experienced doctorate members. I wish you thank you, and looking forward to again join in various topics. Thank you. Thank you, Ishan. Thank you. No other participants? कोई और? Good evening, sir. Yes, Faiza. Yes. Sir, I'm Faiza and I'm faculty of Botany in Saharanpur, Sanskar College, which is under Masha Kumbri University. And yesterday I did Prabhakar sir's lecture, and it really helped me to know what is going in journals that is fake, and we are also being played because when we are in MSc, we don't know much about these journals and research paper and all. And after attending such lecture, I really got so much of knowledge that will help me further to be aware of such things. And I really thank Gopal sir and for his hard work, because he is also faculty in private college, and I can understand because I'm also faculty. We have in private so much, which is really his lectures. Sir, that is really appreciable. एंड थैंक यू सर कि आपने हमें इतने अच्छे अच्छे फैकल्टीज से मिला, और बहुत ही अच्छी हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली, और हम आगे सर आपसे जो भी आपके नेटवर्क में बाकी सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज है उनसे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ऑलवेज. हम हमेशा उनको जुटाते रहेंगे, आप करते रहिए, है ना. इट्स गुड. लर्निंग टेंडेंसी होना चाहिए, है ना. तीन कोई समस्या नहीं आएगी आपको, और हमेशा आप जो है ना आगे बढ़ते रहेंगे. So if there is no more feedback, then I now request our guest and our teacher Rakesh Patel sir to say a few words, few suggestions about my course,
about the students. Any other suggestion if you want to give us? Rakesh Patel, sir. Good evening, Gopal Ji. Good evening, Prabhakar Jha, sir. And all students as well as faculty who have been participating in such kind of courses. Gopal Ji, I know him since last, I would say, more than 20 years. When he was a student in Gujarat University Biotechnology course. And he is a person who is never exhausted. As you can see, it is 7:30 and still he is in his home. He starts his day very early in the morning and keeps on going till late because as a faculty, I understand the hard work which he is able to put in. Because when today's work is over, it is not over, it may be over for listeners or learners or for students. But for a teacher, he has to see it that he has to prepare it for tomorrow. And that is also a very tough task. Even if I consider my own experience, I taught microbiology for 41 years. But even in the last year of my teaching, I needed the preparation for a good lecture. Otherwise, see, after 40 years, if I wake up from my sleep at 2 o'clock and if somebody would say, please tell us something about this microbiology subject, I would definitely be able to speak for an hour or more. But then that would not be justified on my part. It requires a preparation for any good teacher. And that is what is being reflected in Gopal. As he's finished this 8th course and 26 course of recombinant RNA technologies, it is a mammoth task. When it began, I personally, frankly, I say that he would not be able to continue more than 2-3 classes like this, online lectures. But then, slowly and slowly, as I can see, 26 courses for recombinant DNA technology and this proteomics and genomics 8th course. It is really commendable. He is also associated with GSBTM and he is also preparing students for certain examinations which will be helpful for students to pass their next slate in biosciences. So his contribution to the subject is immense. There is no doubt about it. Now, as far as my message to the students goes, see, when I studied, I was in a MSc microbiology. At that time, I am talking about 78, class of 78. My seminar was on PCR, classroom seminar, which was compulsory for us to deliver. And that time, that particular technique had been discovered very recently. Okay, there was very little material available. There were no Xerox. Books were also absent. Forget about the Xerox materials. Very few books were available, and that books which were available in India must have been published 3 to 5 years earlier. Then it would come to India. So, finding a material and studying them and then preparing it was a very mammoth task. Very, very, very difficult. But what I am able to see at present is you have a plenty of material available on net as well as courses like this which would definitely guide you. But what I
find lacking among the student is kind of a zeal, or what you call it as a, in Hindi I would call it as a, एक आग होनी चाहिए दिल में कि मुझे सीखना है, मुझे करना है. In my class, I would also tell my students that one has to fall in love with the subject. If you fall in love with the subject, I give that routine example that if you are in love with some girl, you will go to any distance for her. Even if at night it is raining, it is very cold, and if she calls you at 2 o'clock that please, I am stranded at some place, please help me, you will run like a mad person. So, point is that you have to fall in love with a subject. It may be microbiology, it may be biochemistry, it may be biotechnology or anything. Like, Meera, she fell in love with Krishna. सोते जागते सुबह शाम हर वक्त उसके दिमाग में शाम 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 रहता था, और वो जहर का प्याला भी दिया, वो भी उसने उस शाम के नाम पे पी लिया था, because she loved it. So the point is, whenever you are learning, or students, this is a very important message from my side, that in class or in your age, you drink microbiology, you sleep microbiology, you walk microbiology, you talk microbiology. It means microbiology आपके रग में दौड़ना चाहिए. I'm giving you example of microbiology because I teach microbiology, but it is true with any subject. It may be biochemistry, pharmacy or biotechnology. अगर आपके कोई experiment का result नहीं आता है, say for example, during your practicals, you do not get the expected result. While going to your home on a motorbike or on an Activa, you have to think क्यों नहीं आया है. ऐसा नहीं है कि लैब में जाएंगे तभी हमको सोचना है कि यार अभी चलो क्यों नहीं आया. But when you are driving, when you are cycling, when you are doing any other work, तो ये दिमाग में रखो कि क्यों कहाँ पे मिस्टेक हुआ है. अगर ये चीज जब दिमाग में आएगी तो सब्जेक्ट अपने आप आएगा. सब्जेक्ट को सीखने के लिए आपको और कुछ नहीं करता है, एक दिल में प्यास होनी चाहिए, आग होनी चाहिए कि मुझे एक्सेल करना है. Without this, so there are hundreds of biotechnologists coming out. There are thousands of microbiologists who are passing out. But you have to be on the first few. At the top, the place, like it is like a pyramid, At the top, space is very less. Unless and until you excel in your subject, you will not be able to get a good job or a career opportunity. So those who have opted for this kind of course by sparing certain time of their own, I congratulate them, because why they have attended? Because they have a thirst to learn something. Why they have paid the fees? Because they have to understand the subject properly. And this is something extra, which is apart from your routine curriculum or routine classes. So when you do certain things which are extra, you will definitely be rewarded. So with this message, I would again congratulate Gopal Ji, and I would say, Prabhakar sir, that I missed your lectures, because normally what happens, since I have been, I retired before 3 years, I have got my other work, social works, which I am doing it at my village. And many times I go there, therefore where the internet and other facilities are not available. But still, I am interested in the subject, and that is why whenever I am in my city, Ahmedabad, I do make it a point to attend Gopal Jee's lectures, because he has been inviting certain prominent figures. And see, for me, genomics and proteomics all mixed. In my career, there was nothing like that.
This is the subject which has come up in the last 15-20 years. And I know very little about it. So I do have a fire to understand something, what is going on. Even I would like to listen to other professors, other experts from the field in future also. So I'm thankful to Gopal Ji, who is messaging me that such and such expert is coming, and definitely I would like to make it for the lecture as far as possible. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So from 12th December, we are going to conduct GSBTM sponsored 15 days on-site crash course. That is 128 hours crash course for BSc final year student. And fooding, lodging, everything is beared by GSBTM. So student don't have to pay any money. So you can see Gujarat government is doing so much, but students are not willing to give more than 3 hours time for our time. I would like to add one thing, that this year, in the beginning of this year, I enrolled myself in GSBTM sponsored program, entrepreneur, biotech entrepreneur program. Yes. Where probably I was, when I applied for it, I thought that am I a right candidate or not? Because at the age of 66, nobody goes for studying anything. And even my various friends also told me that what is the need and other thing. Because I thought I may not be, I knew microbiology and biotechnology to a certain extent, but I am not aware of what is entrepreneurship. So I attended a 4-month classes on Saturdays, Sundays in EDII in Koba, Ahmedabad, and I was immensely benefited by it. Immensely benefited. Various colleagues were there. They were very young, at the age of around 30 to 35, and they would definitely be benefited as a kind of an entrepreneur in future. So learning never stops. The point is that learning never stops. ज्ञान बट रहा है सब जगह पे, जैसे वो पिक्चर में भी बोलते थे आमिर खान की, ये ज्ञान सारी जगह से बट रहा है, जितना इकट्ठा करना है करना कर लो, वो आपके पर। देने वाले ज्ञान है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर है, अच्छे अच्छे लोग हैं, आप बटोरते जाओ जितना हो सके, कभी ना कभी तो काम आएगा, कभी ना कभी काम आएगा। Thank you. Thank you, sir. Now I request Prabhakar ji to share few words about our course, any suggestions about my course, or any suggestion for participants, or scope for genomics, proteomics briefly. Yes. Thank you, sir. Thank you for inviting me. And yesterday I had a session, so thank you for that opportunity. Nothing means whatever I want to say for students. Normally, as sir told, Gyan batra hai. So normally, even after my class, means after coming to from the university, I normally sleeps at 12 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock, and try to learn as much as I can through video, through different sessions, through different seminars. Probably roughly every week 3-4 hour session I am attending in the evening after coming from the university. Try to learn as much as I can. See, for students, every faculty or everyone is having 24 hours only. No one is having 25th hour. So, जब faculty time spent कर रहे हैं, and you are also, because you are also means attending the session, joining the session even after your university or after your time. So that is extra hard. So interest है तभी कर रहे हैं. So if you are having interest, then only you are trying to learn certain thing, and faculty also trying to give certain things. Gopal Ji sir, I know him from 13-14 years probably, sir, I think. And he invited me so many times because of my time, and I have not getting so much of opportunity. So I didn't participate in many of the sessions. But to conduct a session for 33-34 times, 34 different sessions continuously, that is
a remarkable achievement, you can say it, because it's not possible for any normal human being. It's impossible for me, especially. I have a YouTube channel. I am not able to upload my own video even after months because I'm not getting time. So conducting a continuous session for 34 sessions, 34 series of lectures, arranging a different kind of experts, different kind of participant, it's tough task. So for students, everything is available. Gopal Ji said probably you may have mobile number, phone number, email ID, and he is always ready to help everyone. So you can reach to him, you can ask to any of them, because if you want to take help from any of the faculty, any of the resource person. If a teacher is there, a teacher normally never says no to any students. दैट इज ए रियल टीचर. कभी भी ना नहीं बोलते हैं. आप कभी भी पूछिए, हो सकता है कि टुडे आई विल नॉट हैव एनी आंसर, टुमारो आई विल रीड इट एंड देन आई विल टेल इट टू यू. स्पेशली आई एम डूइंग सेम थिंग. मेरी क्लास में भी किसी स्टूडेंट ने अगर कुछ क्वेश्चन पूछा, हो सकता है मुझे आज नहीं पता हो, सबको सब कुछ नहीं पता होता है, या आई मिस सर्टेन थिंग्स. सो टुमारो आई विल कम, आई विल गेट. मेरा जो होता है कि इफ स्टूडेंट, मेरा काम है एज ए टीचर ईगरनेस को जगाना टीचर स्टूडेंट के मन में. इफ स्टूडेंट विल गेट ईगरनेस, उसके मन में कुछ सवाल आ जाए. दुनिया में सारी चीजें अवेलेबल हैं, बुक्स में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत वीडियो अवेलेबल है. बट एज ए टीचर माई थिंग इज टू इंक्रीज द फायर, सो दैट आप जाके घर पे जाके कुछ सर्च कीजिए, कुछ आंसर ढूंढिए. जो सवाल मैंने पैदा किया है या जो सवाल मैंने आपको समझाया है, उस सवाल का आंसर आप खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे. एक बार अगर आपको ढूंढने की आदत पड़ गई कि आई शुड गेट दोज आंसर्स, तो from tomorrow onwards you will start reading, you will start searching certain number of things. आप एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम इतने सारे बायोलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं. आप सिंपल सा सोच के बैठिए कि आपके टेबल पे 10 बुक पड़े होंगे, आपको एक बुक ढूंढने के लिए अगर दिया जाए तो आपको 10 मिनट टाइम लगेंगे. एक हमारा सेल होता है, नॉर्मल सेल. इन दैट सेल we have so much of proteins, so much of complicated metabolic process, regulatory process, molecular process is going on. Just बैठ के सोचिए कि how all those regulated process are going on. वो किसी मूवी से कम नहीं लगेगी आपको अगर आप सोचेंगे उसके बारे में. तो कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, रेगुलेशन कैसे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, उस चीजों को उस छोटे से सेल में जिसको मैं देख भी नहीं पाता है. So cell which you cannot see by naked eyes, inside that cell so many things are going on in a regulated way. अगर ये सब चीज बैठ के आप सोचेंगे ना, तो आपको चीजें थोड़ी अच्छी लगनी शुरू होगी, और अच्छी लगनी शुरू होगी तो आप उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो आप पढ़ना शुरू करेंगे. सो ट्राई टू गेट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. एवरी सब्जेक्ट आर इंटरेस्टिंग. आपको अपने मन में आना चाहिए कि इंटरेस्ट आ जाएगा. एक बार इंटरेस्ट आ गया, दैट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल. दिस इज फ्रॉम माय साइड. Thank you प्रभाकर जी. And try to use as much as possible, because आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है. इंटरनेट पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी बुरी अवेलेबल है, बुरी चीजें भी अवेलेबल है. सोशल मीडिया पे हम जाते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल. उसमें से कुछ समय आप अपने लिए निकालेंगे, बिकॉज यही चीजें हैं जो हमें बाद में जाके काम देती है. सो दीज थिंग्स नॉर्मली हेल्प अस, क्योंकि टुमारो इफ यू आर गोइंग टू बी ए टीचर, गोइंग टू बी ए रिसर्चर, सो सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, बट ये चीजें हमें थ्रू आउट कैरियर काम देंगे. इसी को मैं यूज करूंगा आगे जाके. मैं कल भी गया हूँ VNSU में लेक्चर लिया हूँ, तो वहाँ बच्चे लंच से आए लेट से, तो मैं बाकी बच्चे को बताया कि अगर हिरन का झुंड है और शेर खदेड़ रहा है, सब भाग रहे हैं, कौन शेर का शिकार होगा? जो सबसे कमजोर होगा, जो सबसे पीछे होगा. लाइफ में सबसे अगर छटनी होगी या नौकरी नहीं मिलेगी, जो सबसे नीचे वाला उसको नहीं होगा. नौकरी मिलेगी जो सबसे टॉप पर होगा. दिस इज फेयर थिंग्स, है ना. टॉपर जो है, एवरेज से जो ऊपर है, उसके लिए सारे अपॉर्चुनिटीज है. आप अगर पीछे हैं तो आपके लिए सब कुछ जो आगे वाले छोड़ दिए वो आपके लिए बचेगा. तो आपको हमेशा आगे, एवरेज से आगे रहना पड़ेगा, तभी होगा. सब लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा चाहिए लाइफ में, तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. Perfect. So thank you again. I will take 5-10 minute more. So प्रभाकर जी, thank you for giving your time. आप family time दीजिए. Till sir.
Thank you very much, Gopal. 10-15 मिनट का बच्चा है, then I will wind up, है ना. और सर आप जो बोले 7:30, we take from 5:30 to 8:30, है ना, 3 hours for 11 days, 12 days. ऐसा रूटीन है. Then that's why starting from May 2020 we have completed this, है ना. क्योंकि गूगल मीट तो 2020 कोरोना से पहले मुझे आता ही नहीं था गूगल मीट कुछ होता है. कुछ कोस्ट में इंटरव्यू देने गया तो बोला कि क्या करोगे आप साइंस के लिए, तो हमने बोला कि कुछ ऐसा डिवाइस जो हम ऑफिस में रह के और एड्रेस कर पाए लोगों को. तो बोला जूम सुने हो, मतलब जूम तो सुने ही नहीं है. 2020 के शुरू की बात बोल रहा हूँ ना, मार्च से पहले जब कोरोना नहीं आया था. आई वॉज नॉट नोइंग कि फ्रीली ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल. So we have utilized that this platform for dissemination of knowledge. And I always provide confidence of a student as well as teachers. We also utilize my network for dissemination of knowledge. Yes, हाँ प्रभाकर जी कुछ करना चाह रहे हैं? सर कुछ बोल रहे थे. Sir, one of the greatest gift of Corona is this, that online lectures, you can arrange it, you can get the knowledge, you can interact with one another. Because before Corona, this was existing, but people never used to make such मतलब ट्राई भी नहीं करते थे और उनको आता भी नहीं था. So जो कहावत है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो ये है कि कोरोना आया तब हमको पता लगा कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन हो गया. और आज देखो प्रभाकर सर कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, गोपाल जी कहाँ है, कोई आंध्रा से है, कोई तेलंगाना से है, कोई साउथ में से, कोई ईस्ट में से. तो किसी बैच में सर श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया सबसे भी लोग आए हैं, कनाडा से भी आए हैं कुछ बैच में. वर्ल्ड इज गेटिंग वेरी स्मॉल. Yes, and डेवलप लाइक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, खाली हमने केबल का नेट लगा लिया GTPL का और लैपटॉप. The entire world is in this laptop. In this, pura. So I'm enjoying this. Whatever I have learned during my PhD, postdoc, MSc. उसके बाद तो फैकल्टी बनने के बाद नया लर्निंग तो बहुत कम होता है और हैंड्स ऑन तो बहुत और भी कम. Because well equipped lab जो JNU में था वो बहुत मुश्किल है मिलना. So I have learned from failure. मेरे गाइड भी बहुत कम इंटरेक्शन में रहते थे सर. So एक ही एक्सपेरिमेंट को 4 बार 5 बार कर. That's why I am getting confidence. So I am able to reply questions from all the participants. Sir, I teach 12-13 types of gel electrophoresis. सर हमने जो है ना, हम PCR बताते हैं, इसमें नहीं रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में PCR हम 14-15 टाइप का बताते हैं. गोपाल जी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आप जो भी करते हैं उसका भी एक लाइव रिकॉर्डिंग कर लिया करो आप. हाँ, जो प्रैक्टिकल्स आप ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स में आप जो खुद करते हो उसका रिकॉर्डिंग करके you can either show them during your lectures, or even you can say this is an additional reading. You go through these videos at your leisure time. That will also help the students to a great extent. Yes sir, yes sir. तो क्लोनिंग तो अभी बहुत दिन के बाद जब GRF लिया, देन वी हैव परफॉर्म क्लोनिंग है यहाँ पर में. मेरा प्लास्टिक डिग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है उसमें. बट क्लोनिंग यू नो कि बहुत डिफिकल्टीज से हो रहे हैं यहाँ पर में, क्योंकि इसी लैब ने वो सब. Not that easy. Yes. Because reagents, chemicals and everything, that is very costly. And quality also, quality, if we compromise rate, so quality भी ऐसा मिलेगा, and we cannot identify what is going on, है ना. रिजल्ट बाद में आया नहीं, then after 10 step we come to know कि क्या हो रहा है. Definitely, because I remember that before say 15-20 years in UG, isolation of DNA was introduced as one of the practicals, but then later on syllabus committee members, they realized that it is impossible to conduct such an experiments at UG level where there are 100 students in a batch of, it may be 20 other things, but then the reagents and other things are so costly. Even if a slight impurity in water would not help you out in isolating to these things.
So, and whatever grant in aid colleges and other things they are giving, government grant which is being given to us, it's extremely poor. So those who do it, you do those practicals yourself. So please make those videos, recordings, and then you can show them to the students. Yes. So participants, please wait for 10 minutes. So now I'm completing. ठीक है? Thank you, sir. Thank you, Dr. Sir. Thank you, sir. Thank you. Participants, please wait. I'm completing this.